So in today's class, we are going to proceed with exercise 5.3. 5.3 आपके लिए वैसे कोई नया कंसेप्ट नहीं है, आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है. अब ध्यान से देखो तो ये क्वालिटी की क्वेश्चन है. तो मैं क्वेश्चन के साथ साथ ही कंसेप्ट क्लैरिफाई करता हूँ. लाइक फर्स्ट इक्वेशन है आपकी एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0. आपको इसको सॉल्व करना है. एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0. ये तो सिंपल है, इसमें तो कुछ नहीं करना है. एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3. अब जब आपका स्क्वायर राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा तो ये क्या होगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट. अब देखो स्क्वायर रूट के अंदर -3 है. 10th क्लास में ऐसे क्वेश्चंस को हम कहते थे नो रियल रूट एक्सिस, और उसके आगे हम सॉल्व नहीं करते थे. लेकिन अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को डील कर रहे हैं. कॉम्प्लेक्स नंबर में आपके रियल नंबर भी आते हैं और नॉन रियल नंबर भी आते हैं. तो बिगेस्ट सेट होता है आपका. तो अब हम इसके साथ डीलिंग कर सकते हैं. कैसे? -3 को आप इमेजिनरी नंबर का यूज करके हम आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं. -3 कैन बी रिटन एज -1 into 3, and further it can be written as square root of -1 into √3. Now what is the value of square root of -1? That is iota. We have already studied in the previous classes that iota is equal to root of -1. So plus minus iota √3. This is the value of this. Okay. Part 2. 2x square plus x plus 1 equal to 0. Okay. अब ऐसे क्वेश्चंस में बेस्ट होता है हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करते हैं, जो हम ऑलरेडी 10th क्लास में पढ़ चुके हैं. बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d/2a, वेयर d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac. अगर मैं इसको नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करता हूँ, दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. तो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज a, दैट इज 2. कोएफिशिएंट ऑफ x is b, that is 1, and constant, that is c, equal to 1. First of all, we will find the value of b, that is b square minus 4ac. b square, now here b is 1, 1 square minus 4, a that is 2, and c that is 1. So 1 square, that is 1 minus 8, it will be equal to -7. So value of d is -7. Now we will apply the formula. Value of d is -7. X equal to -b plus minus √d/2a. So value of b, that is 1. Value of d, that is -7 upon 2a. Value of a is 2. Now it can be written as root of -1 into 7. Again -1, root of -1 means iota. So basically root -7 means iota √7 upon 2 to the 4. Further it can be simplified as -1/4, as we know that हम न्यूमरेटर टर्म्स को सेपरेट कर सकते हैं, प्लस माइनस iota √7/4. This is the solution of second question. Now question number 3rd, that is x square plus 3x plus 9 equal to 0. Okay. If I compare this equation with the quadratic equation, that is ax square plus bx plus c equal to 0, what will be left? Coefficient of x square, that is a, that is 1. Coefficient of x, that is b, that is 3, and the constant term is 9. Now we know that d is equal to b square minus 4ac. What is b? That is 3 square minus 4a c. 9 minus 36, that is -27. Now we know that x is equal to -b plus minus √d/2a. Value of b, that is 3. Value of d, that is -27, which can be further written as, अगर रूट के अंदर माइनस आता है तो आयोटा हो गया, रूट माइनस आपका रिमूव हो गया, वी आर लेफ्ट विद √27. And 27 can be written as 3 into 3 into 3, that is 3√3. Now further it can be simplified as -3/2 plus minus iota 3√3/2, and this is the final answer of this question. Question number 4, minus x square plus x minus 2 equal to 0. Again same concept. Here a coefficient of x square, that is -1.
coefficient of x that is 1 and constant term is -2. First of all, finding the value of d, b square minus 4ac. b is 1, 1 square, minus 4a minus 1, c minus 2. 1 square 1, minus minus plus, plus minus minus, minus 8. That is minus 7. The value of x is minus b plus minus root d upon 2a. b that is 1, d that is minus 7, which can be again minus, that is iota root 7 upon minus 2. Now further, when we separate numerator, minus 1 by minus 2 plus minus iota root 7 by minus 2. What we will have 1 by 2. अब देखो ये माइनस जब न्यूमरेटर में जाएगा तो प्लस माइनस तो हो जाएगा माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस. इज इट क्लियर? x square plus 3x plus 5 equal to 0. Okay. Again, coefficient of x square that is 1, a, coefficient of x that is b, and constant term is c. d is equal to b square minus 4ac. That is 3 square minus 4 into 1 into 5. 9 minus 20 equal to minus 11. So finally x will be equal to minus b plus minus root d upon 2a. That is minus 3 plus minus. In place of d, we will put minus 11 upon 2a, that is 1. So minus 3 plus minus iota root 11 by 2. When we separate these two terms, numerator terms, we will have minus 3 by 2 plus minus iota root 11 by 2. This is the final answer of this question. Next question is question number 6. That is x square minus x plus 2 equal to 0. Again, value of a is 1, value of b is minus 1, and value of c is 2. Putting these values in this formula, minus b, minus and b, that is minus 1, plus minus d. What will be d here? B square minus 4ac. Now b square is minus 1 square. In place of a, that is 1. In place of c, that is 2. That is 1 minus 8, that is minus 7. So in place of d, we will put minus 7. And which can further be written as iota root 7. So our final answer will be 1 by 2 plus minus iota root 7 by 2. Let's move to the next question. Question number 7. Root 2x square plus x plus root 2 equal to 0. Okay. Now coefficient of x square, that is a, coefficient of x, that is b equal to 1, and constant term c equal to root 2. d is equal to b square minus 4ac. b square, that is 1 square, minus 4. In place of a, that is root 2. In place of c, that is root 2. So 1 minus root 2 into root 2, 2, and 2 4s are 8. So 1 minus 8 is equal to minus 7. By putting all these values, in place of b, we will put 1. In place of d, we will put minus 7. In place of a, we will put root 2. So finally, what we will have, minus, that is iota root 7 upon 2 root 2. We know that root 2 is an irrational number. तो हम इसको rationalize करेंगे. How? Multiplying numerator and denominator by root 2. What we will have? Root 2 into minus 1, that is root 2, plus minus iota root 7 into root 2, which can be written as root of 7 into 2, that is root 14, upon root 2 into root 2, that is 2, 2 2s are 4. So finally, what we will have? Minus root 2 by 4 plus minus iota root 14 by 4. This is the final answer of this question. Next question is question number 8. Root 3x square minus root 2x plus 3 root 3 equal to 0. A, root 3, B, minus root 2, and C, 3 root 3.
value of b square minus 4ac, that is minus root 2 square minus 4a, that is root 3 c 3 root 3, 2 minus root 3 into root 3, that is 3 into 3 into 4, 4 3 are 12, 12 3 are 36, that is minus 34. So b is equal to minus root 2, a is equal to root 3, and d is equal to minus 34. So minus, in place of b, we will put minus root 2, plus minus in place of d, that is minus 34, 2a, 2 root 3, minus minus root 2, plus minus root 34. भाई ये minus है, when it will come outside, it will be iota, because root of minus 1 is iota. Now again, rationalize the irrational number, that is root 3. Root 3, multiply numerator, denominator by root 3. It will be root 2 into root 3, that is root 6, plus minus iota. Again, root 34 into root 3. We know that root a into root b will be equal to root of ab. That is root 34 into 3, that is 102. Root 3 into root 3, 3 2 is 6. So what we will have, root 6 by 6 plus minus iota root 102 by 6. This is the final answer of this question. Question number 9, which is the most expected. अगर यहाँ से कोई एक क्वेश्चन आना होगा तो ये आपका आने के चांसेस है. x square plus x plus 1 by root 2 equal to 0. That is, first of all, we will simplify it. Our LCM will be root 2. Root 2 into x square, root 2x square, plus root 2 into x, root 2x, plus 1 equal to 0. डिनोमिनेटर को जब आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे, इट विल बी 0. फाइनली वी आर लेफ्ट विथ रूट 2x स्क्वायर प्लस रूट 2x प्लस 1 इक्वल टू 0. नाउ हियर a is equal to root 2, b is equal to root 2, and c is equal to 1. Then d is equal to b square minus 4ac. b square root 2 square minus 4a root 2, and c is equal to 1. रूट 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 minus 4 root 2. So d is equal to 2 minus 4 root 2. Value of a root 2 and value of b is root 2. So what we will have, our quadratic formula is x is equal to minus b, that is minus root 2 plus minus root d. In place of d, we will put 2 minus 4 root 2 upon 2a, that is 2 root 2. Now see, minus root 2 plus minus 2 minus 4 root 2. Further, denominator में आपका irrational number है. We will rationalize this number by multiplying numerator and denominator by root 2. अब देखो, जब आप मल्टीप्लाई करोगे रूट 2 को, जब आप रूट 2 से मल्टीप्लाई करोगे, इट विल बी 2. एंड ये मैंने अभी आपको प्रॉपर्टी बताई थी, रूट a इंटू रूट b इज इक्वल टू रूट ऑफ ए बी, दैट इज रूट ऑफ 2 माइनस 4 रूट 2 इंटू रूट 2. वी विल हैव रूट 2 इंटू 2. ये आपका रूट 2 है और ये रूट के अंदर आपका 2 माइनस 4 रूट 2 है. समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ मैं आपको? तो जब आप देखो, सिंपली आप ऐसे समझो, जब आप 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करोगे, व्हेन वी मल्टीप्लाई 2, तो ये हो गया रूट a इंटू रूट b. जब आप 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करोगे, इट विल बी 2 रूट 2. और जब आप 4 रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करोगे, इट विल बी 4 रूट 2 इंटू रूट 2, 4 रूट 2 इंटू रूट 2. रूट 2 इंटू रूट 2 क्या होता है, 2. 4 2 का क्या होता है, 8. इज इट क्लियर? तो ये हो गया 2 रूट 2 माइनस 8. अब जो रूट 2 होता है, इसकी वैल्यू 1.4 समथिंग होती है. 1.4 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इट विल बी 2.8. तो आपको दिखाई दे रहा है कि माइनस वाला नंबर आपका बड़ा है. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई डिड, मैंने -2 कॉमन ले लिया. जैसे आप ये -8 था तो -2 कॉमन ले लिया, बिकॉज 8 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 2. तो
-2 अगर आप कॉमन लेते हो तो देखो यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, -2। तो जब आप माइनस कॉमन लेते हो तो प्लस वाली टर्म्स माइनस की हो जाएगी, ये आपने कॉमन ले लिया तो -√2, और माइनस वाली टर्म आपकी प्लस की हो जाएगी, 2 2 जा 4, और माइनस आयोटा, और ये √2 आपका एज इट इज, विद इन ब्रैकेट क्या आ जाएगा, 4 -√2। इज इट क्लियर? ये वाला स्टेप क्लियर हो गया? ओके, so now again we can take √2 common, because 2 can be written as √2 into √2. By taking √2 as a common term, we will have -√2 plus minus 4 minus √2 by 4. Okay. Last question of this exercise, that is question number 10. X square plus x square √2 plus 1 equal to 0. So a is equal to √2, b is equal to 1, and c is equal to √2. First of all, we will find the value of b, that is b square minus 4ac. b square, 1 square minus 4. In place of a, we will put √2. In place of c, we will put √2. √2 into √2, that is 2. And 2 into 4, that is 8. That is -7. So d is equal to -7. A is equal to √2. And b is equal to 1. So finally, what we will have? X is equal to minus b, that is -1, plus minus √d. In place of d, that is -7. 2a √2 minus, that is iota √7. को रैशनलाइज करेंगे हम डिनोमिनेटर को by multiplying numerator denominator by √2. What we will have? -√2 -1 into √2 minus √2 plus minus plus minus √7 iota into 2, that is √14. upon 4. Okay. √2 into √2, that is 2, 2 to the 4. So our final answer will be -√2 by 4 plus minus iota √14 by 4. Your exercise has been completed. अब आपको नोट्स बनाने हैं, उसके बाद जो भी डाउट्स होगा नेक्स्ट क्लास में मैं पहले आपके डाउट्स दूंगा, देन विल प्रोसीड विद अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज. ओके.